Hello everyone, this is Gansham Bajaj. I hope you all are doing very well. Stay home, stay safe. In this video, I would like to teach you the reflection of light, which is the topic of class 10, chapter 10, light. Clear? You can see a Mickey Mouse, he can see its image from the mirror just because of reflection of light. In this image, you can see a beautiful dog. Dog can see its image from the mirrors just because of reflection of light from the mirror. Reflection of light also can create magical images like this image. Just because of reflection of light, you can see your beautiful face or you can see your handsome face from the mirror. The very important application of reflection of light is periscope. It is also used for military purpose. In this image, you can see a person is using periscope because he wants to see the person who is behind the wall. This person is also using periscope. In periscope, reflection of light is also used in cars, in automobiles. Okay, reflection of light used for creating parallel beam of light in headlights of the cars. You can see a beautiful light of the car. It is producing just because of reflection of light. So it is used in the headlight of the automobiles or headlight of the cars. You know, dentists use the concave mirror in which reflection of light take place. So when doctor wants to see the cavity of the mouth or cavity of the teeth, then he is able to see just because of reflection of light. Reflection of light also used in solar cookers to concentrate light, which produces heat. Let me discuss how do we see things. Just because of reflection of light, we can see the things. You can see in this image sunlight incident on a tree. Then after reflection, the lights enter into the eye. Clear? That's why you are able to see the things. How do we see things? When light hits something, it bounces back. When this bounced light reach our eyes, we see things. This is why we need light to see something. So now let me discuss what is the reflection of light. How will you define the reflection of light? The bouncing back of light from a reflecting surface is called reflection of light. Reflection is bouncing of light when it hits something. So the bouncing back of light from a reflecting surface is called reflection. When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of light. जब लाइट फॉल्स होती है किसी हाईली पॉलिश सरफेस पे मिरर की तरह, तो लाइट जो है वापस उसी मीडियम में चली जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So you can see this image, the incident ray, you can see the reflected ray. You can see what is the incident ray. The incident light is called incident ray, and the light which goes after reflection is called reflected ray. What is the normal? The normal is drawn at the point of incidence, clear, at the right angle to the plane surface. And now what is the angle of incidence? The angle between the incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection. Clear? What is angle of incidence? The angle between the incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection. So how will you define incident ray? The ray of light falling on the surface. Reflected ray, the incident ray bouncing back in the same medium after striking the reflecting surface. इंसिडेंट रे जो सरफेस पे फॉल होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो फॉल होने के बाद जो रे वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे होता है? जहाँ पे इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करती है मिरर के और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती है. नॉर्मल रे कहाँ पे ड्रॉ की जाती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ की जाती है जो कि सरफेस के 90 डिग्री पे होती है. इट इज़ द लाइन ड्रॉन perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. What is the angle of incidence? The angle between the incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection. Now let me discuss the very important topic, laws of reflection of light. Laws of reflection of light का पहला लॉ है the angle of incidence is equals to the angle of reflection. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा. सेकंड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन.
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तीनों का प्लेन एक ही होगा. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie on the same plane. नॉर्मल भी कौन सा होगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द surface. So you can see the first point, the angle of incidence is equals to the angle of reflection, and the second point, the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. Now see the numerical which is based on the laws of reflection. Yes, you can see the angle of incidence is 45 degrees in this image. So what will be the angle of reflection? Of course, the angle of reflection also will be 45 degrees because angle of incidence is 45 degrees. So according to laws of reflection, the angle of incidence equals to angle of reflection. So angle of incidence is 45 degree. So angle of reflection will also be 45 degree. For solving such type of numerical, you have to take care about one thing, that angle of incidence should be from the normal. जो angle of incidence होगा वो normal के साथ होगा. क्लियर. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपको कहाँ से लेना है, नॉर्मल के साथ लेना है. अगर आपको कोई भी एंगल अगर मिरर की सरफेस के साथ गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, जो एंगल जो है वो इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ गिवन है 10 डिग्री, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री नहीं होगा. आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स 80 डिग्री. व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 80 डिग्री. So you can see the question, light is incident on a flat surface making an angle of 10 degree with that surface. What is the angle of incidence? What is the angle of reflection? And sketch the path of the reflected beam on the diagram. Clear? You can see the angle of incidence is 80 degree, angle of reflection is 80 degree. Clear? If the light makes an angle of 10 degree with the surface के साथ 10 degree angle बना रही है, so it makes an angle of 80 degree with the normal. So the angle of incidence is 80 degree, and according to the laws of reflection, angle of reflection will be also 80 degree. You can see the path of incident ray and the reflected ray. The angle of incidence is 80 degree, so the angle of reflection will also be 80 degree. See the another numerical, a ray of light is incident towards a plane mirror at an angle of 30 degree with the mirror surface. Again 30 degree एंगल जो बन रहा है वो मिरर की सरफेस के साथ बन रहा है. सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट आप जानते हैं अगर एंगल मिरर की सरफेस के साथ 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी 60 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज एंगल आपको सरफेस के साथ गिवन है. तो 54 डिग्री आप 90 में से माइनस करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 36 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी 36 डिग्री. क्लियर. नाउ यू वांट टू फाइंड द कैलकुलेट द एंगल. थर्ड क्वेश्चन यू वांट टू डू, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड एंड द सरफेस. इंसिडेंट रे का जो एंगल सरफेस के साथ था 54 डिग्री, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का सरफेस के साथ होगा. आंसर कितना आएगा, 54 डिग्री. Now fourth question is calculate the angle made by the incident ray and the reflected ray. आपको एंगल निकालना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 36 डिग्री. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 36 डिग्री. तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का सम हो जाएगा 70 डिग्री. You can see the angle of incidence 90 minus 54, 36 degree. First answer. Second answer, angle of reflection according to laws of reflection, angle of reflection also will be 36 degree. Clear. Now angle made by the reflected and the surface, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है 36 डिग्री, तो सरफेस के साथ एंगल कितना होगा 54 डिग्री. एंड द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इट विल बी सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सम ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन which is 72 degree. Now I am going to discuss a very important question. A light ray is incident normally on the plane mirror. Find the direction of the reflected ray with diagram. और in this question he may ask what is the angle of reflection. नॉर्मली देखकर आंसर जो है बच्चे 90 डिग्री लिख देते हैं. सो आप ध्यान रखें, आप इसका आंसर 90 डिग्री ना लिखें, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली मिरर के साथ वो इंसिडेंट हो रही है. तो आप जानते हैं अगर मिरर के साथ एंगल नॉर्मली है, मतलब मिरर के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम 90 में से माइनस करेंगे. इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी 0 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा.
See the answer. When light rays incident on a plane mirror, it undergoes reflection. When the light rays incident normally on the plane mirror, then by using laws of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. The angle of incidence is 0, so the angle of refraction also will be 0 degree. So reflected ray will reflect back in the same path as that of the incident ray. आप देख सकते हैं कि जो रे जो है वो मिरर के 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है. क्लियर. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा. इसका मतलब जो रे जो है जिस पाथ में आई थी उसी पाथ में वापस चली जाएगी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे. प्लीज़ डू न्यूमेरिकल्स एज मच एज यू कैन डू.